Assalamu alaikum everyone. I hope I am audible to you guys. Okay, so I hope everyone is doing well. Firstly, I would like to welcome all of you for joining us today for this session. This session is particularly a collaboration between Team Huawei Fusion Solar Pakistan, Bahum Associates, and Pantera Energy. So okay. Let's start with the brief introduction of the topic we will be discussing today. So today we'll be discussing about empowering efficiency and sustainability with Huawei Smart Power Control Advanced Solution for Intelligent Energy Management. In this webinar, we will explore how Huawei's cutting-edge power control solution offered by Huawei and how they can optimize energy efficiency, enhance sustainability, and drive intelligent energy management across various industries. All right, so before moving on further, I would like to introduce all my panelists. My name is Fatma Rashid and I'm representing Pantera Energy. I'll be your host for this session. Then we have Muhammad Awais Asmat, who is working as service and project manager at Huawei Fusion Solar Pakistan. He possesses 7 to 8 years of substantial commercial, industrial, and utility scale experience in power generation industry, from thermal power station to renewable energy. Thank you, sir, for joining us today. Then we have Mohammad Faizan, who is representing Bahum Associates. He is working as manager product and technology, possess vast experience in solar, industrial, and commercial projects, from designs and project management. Thank you, sir, for joining us today. Then we have Alkamash bin Javed, who is working at Pantera Energy as an assistant manager operations, commercial and industrial. Okay, so Alkamash will be telling us about Huawei Smart Power Control, advanced solution for intelligent energy management. Alkamash and Faizan both will be briefing us about this. And then Mohammad Awais Asmat will be briefing us about Huawei after sales capability and some amazing success stories. So without any further delays, I think we should begin with our session. I'll be handing over the stage to Mr. Alkamash bin Javed so that he can proceed with his part. And other than that, I would like to tell my audience, if any of them have any questions or queries, you are welcome to put all your questions in the chat box. Our expert will answer all your queries by the end of the session. So Alkamash, over to you. Thank you so much, Ms. Fatma. Ji, Assalamu alaikum. I'm Alkamash bin Javed, Assistant Operations Manager from Pantera Energy. Thank you, Ms. Fatma, for providing chance to share the knowledge about the solution of intelligent energy management by Huawei. Intelligent energy management is a system which enables users to control solar generation as per his operation and requirement, whether he wants to export excessive energy to grid or not, or he just wants to run his load on solar. Huawei provides smart power meter for meeting these requirements, which keeps observing import power and export power, and then instruct inverter to adjust the PV generation accordingly. Next slide. Here are some descriptions and specifications of smart power meter. You can connect this meter with single inverter directly or through WLAN dongle or SmartLogger. 2 to 10 inverters can be connected with this meter through WLAN dongle, and for more up to 80 inverters, you can use SmartLogger for power export
controlling with smart power sensor. Smart power meter can be connected directly with single-phase inverter through the RS485 communication port of inverter, which adjusts PV protection according to the pre-configured limit. Complete wiring between inverter and power sensor can be referred as in the picture. Same as it is, one three-phase inverter can be connected directly to the smart power sensor through RS485 port while monitoring load and export at source end through CT of 250 ampere over 50 milliampere. Complete wiring between inverter and power sensor can be referred as in the picture. Multi-inverters up to 9 numbers can be connected with smart power sensor through smart dongle. Smart power sensor is connected directly to RS485 port of master inverter connected with smart dongle. Multi-inverters up to 80 numbers can be connected with smart power sensor through smart dongle. Smart power sensor is connected directly to RS485 connect port of the SmartLogger, which instructs inverter to adjust PV power protection according to pre-configured limits. Adding. Now let's see how we can add a smart power sensor in our application. Adding smart power sensor in a plant is so easy, and it can be automatically detected in second step of inverter commissioning of FusionSolar app. For adding power sensor manually, you can follow following steps shown in the picture. You just need to go to the maintenance, add or delete devices, and then just press the plus sign under power meter and select the connected smart power sensor. After all the connections and adding power sensors, you can configure power adjustment settings from the application in following way. The procedure is shown in the picture. There are 3 settings in control mode. Unlimited mode, which means inverter will work without any limit. The second one is the grid connected with zero power. In this setting, inverter power is only supplied to the active load and no power will be exported towards grid. The third one is power limited grid connection, which specifies the maximum power that can be fed into the power grid. Control accuracy is around about plus minus 5%. Thank you, Huawei, for collaborating with us on this webinar. And now I would like to request Mr. Faizan to take over from here and start the slides onwards. Thank you, Alkamash, for your valuable information. I would now like to call Mohammad Faizan to take the stage and brief us about his part. Mohammad Faizan, over to you. Well, thank you, Mr. Alkamash, for your presentation. And thank you, Ms. Fatma, for giving me this opportunity to present and give our audience the detailed description about the Huawei active power control and reactive power control. Please, next slide. Ms. Fatma, can you hear me? Yeah, I can hear you. Is screen visible to you? Like your slide? Yes, it is visible now. Okay, great. Proceed with your part now.
Okay, so now we will discuss about the control closed loop controller, and as when we do our active power control, so we will have to decide about the closed loop controller. So first of all, I will discuss about the control loop selection. Basically, we have two options here for closed loop controller. When we are using single inverter, we will choose inverter as a closed loop controller, and the sites where we have used multiple inverters with dongle or with SmartLogger, then we will have to choose our smart dongle or SmartLogger as a control loop, closed loop controller. Next slide, please. Next slide, please. Ji. Slide number 20. Yes. This is basically the example for the zero export control setting for single phase. As you can see, there is one inverter of 5 kilowatt and one inverter of 3 kilowatt. So we can add any value to the fixed value, whichever we want from the inverter to give. Next slide, please. All right. Sorry to interrupt you, Mohammad Fizan, but your voice was jarring a little bit. So can you please check your internet connection again? Mohammad Fizan, are you here? I think there might be an internet issue at Fizan's end. I think Fizan has some internet issue. Let's wait for him ताकि वो rejoin कर सके हमें दोबारा. While waiting for Fizan, I would like to tell my participant again कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं. By the end of our session, हमारे एक्सपर्ट उसको एड्रेस करेंगे. Fizan has rejoined us again. Fizan, am I audible to you? Yes, you are audible. All right. Okay, you can proceed. Okay. Now, as earlier I described about the single phase active power control. After single phase, this is basically for the control setting of three phase inverters. There are two types of controlling in this. The first one is with the total power, and the second one is through single phase limit power. So we all know that load cannot be balanced practically, whether it is a residential site, a commercial site, or any industrial site. So we can use any of the settings depending upon the load balancing and requirement. Let me just elaborate this example here for the total power limit. As you can see, the total consumption in the table given is 6 kilowatt, and the load on the phase 1 is 1 kilowatt, and the load phase 2 is 2 kilowatt, and the phase 3 is 3 kilowatt. The inverter in the total control power will take average and give equal power to each phase, irrespective of the load at each phase, that is 2 kilowatt per each phase. So, but in this case, in this type of setting, there might be a chance that any phase will be exporting power to the grid or importing power from the grid. Next slide, please. Yes, now this is the single phase limit zero export control setting for the three phase inverter.
the previous we discussed about the total power. The limitation with the total power was that at any phase there will be some kind of power that would be exporting towards the grid. But in this case, as it just takes the lowest value from any of the phase, and then it will supply, the inverter will supply the lowest value of current to all the three phases. For example, in this example, we have the load of 6 kilowatt. And when we discuss about the load on each phase, the phase 1 has 1 kilowatt load, same the phase 2 has 2 kilowatt, and the phase 3 has 3 kilowatt load. But now, as this is the single phase limit, so the inverter will pick up the least one, the phase 1 load, which is 1 kilowatt, and it will supply 1 kilowatt to all the three phases. So we can check that here in this setting, we don't have any export towards the grid, but there will be import from the grid side at the two different phases. So it depends whatever the setting you want to use in your, it depends on your requirement and the load balancing condition of the particular site. Yeah, this is the response time. Basically, there are two different configurations with which we are reactive controls. For example, if you are using inverter as a closed loop controller, so the response time will be 2 seconds. And if we are using multiple inverters with smart dongle or SmartLogger, then the response time will be 5 seconds. Next slide, please. So this type basically suggests that it is the amount of energy that would be fed to the grid all the time, irrespective of the load. We can adjust any amount of energy that will be all the time of continuously fed to the grid. Next slide, please. Inverter output power adjustment. This is basically for the inverter internal power adjustment. The previous cases we discussed were with the smart power meter, and on the sites where we are not using any smart meter, we can use inverters internal feature for power adjustment. Next slide, please. Next slide. So how we can actually adjust power adjustment in our FusionSolar app? First of all, if we are at the site, we can we have the first page, and then we will click power adjustment, and then after that we will click power output, and then we can select whether we are trying to control our power through percentage or through our any fixed value. Next slide, please. Yes, the first part is control of active power percentage. Basically, I just described that there are two ways we can control our active power. The first one is through power percentage, and the second one is through fixed value. Next. Yes, as you can see, we have a 6 kilowatt inverter, and its output is maximum power output is 6.6 kilowatt. So I just, for example, added 50% rated output, so it will just give us 3.3 kilowatt, which will go towards grid or go towards the load, depending upon the load at that particular time. Next slide, please. Yes, next slide. And now the derated by fixed active power. So previously we discussed it that we can control our active power through the percentage value, and now we'll discuss that we can also control our active power value through the fixed value. For example, if we have a 6 kilowatt inverter and we want our inverter to just give 3 kilowatt of output power, so we will be adding 3 kilowatt in our active parameters. So that inverter will give us a 3 kilowatt of active power. Next slide.
Yes, power radio ripple control option. This option is currently not available in Pakistan, but I will just give an idea about how this function works and what this function is all about. Basically, this function is to give access to the grid operator so that they can control the active and reactive powers of the inverter. Huawei inverter or a SmartLogger can be connected with an external device which is connected with, through a 4 digital input receiver. So these inputs can be used to control the active and reactive power of the Huawei inverters. Next slide, please. This is basically the connection diagrams of the receiver with inverter. Next slide. So in this, just like we do active power control, we will go to the main page and then click power adjustment and click active power control, and then we will add DI active scheduling and enter DI active scheduling. Basically, there are 4 digital inputs with the 16 different logical patterns. All the percentage of the active power scheduling is divided into that 16 status. So we can control our active power control through these 16 status. Next slide, please. Yeah, just like this, we, for example, DI1, DI2, DI3, DI4, these are the 4 digital inputs. We can adjust and set any value. Grid operator basically can set any value to control the active power of the inverter. By default, it should be kept 0000, and the active power should be 100%. Yes, for multiple inverter application, the receiver device is connected with the master inverter with which our smart dongle is connected, and the sites where the multiple inverters are connected with SmartLogger. So our the device will be connected with the SmartLogger. This is the meter compatibility. For this, I will give you the chart, this chart as well. Next slide, please. So reactive power controlling, this is quite interesting topic, as normally this feature was not being used in Pakistan, but now K Electric has asked installers to do reactive power setting as well in accordance to the curve they have provided to the installers. They say that the voltage must not deviate for more than 5%, and the frequency should also not deviate more than 1%. So to keep both these parameters within the range, we have to activate our reactive power feature and do the setting as per the curve given by the K Electric. The next slide I will show you. This is basically the six-step curve. They have given the voltage variation in the percentage from the rated value. So we have 6 steps, and we will be adjusting our reactive power with the correspondence and with respective to the voltage variation. Next slide, please. Yes, this is one of the setting I will describe. For example, if there is a change in the voltage is 110%. So the value basically, I'm just trying to say that we have the value in of voltage in percentage in this setting, and we have to set the value Q in points. So as per that table, we will be inserting our Q values in the table and our U values from that table, and we'll be setting our steps to 6. You can show please other settings as well. Yes, this is the number of U characteristic curve points. This is 6 points, and the U value is 90,
So the Q to S value of first QU curve point will be 0.435. It is same as shown above in the table. Yes, next please. That is it from my side. I will now hand it over to Mr. Abbas Asmat, who will give you a brief description about Huawei sales capabilities and success stories. Thank you, Mohammad Fazan, for giving such a detailed information about reactive power settings and inverter output adjustment settings. So I would like to now call Mohammad Awais Asmat to take over the stage and give a brief information about Huawei after sales capabilities and some amazing success stories. Over to you, sir. Mohammad Awais Asmat Sahab, you are not audible to us. Can you recheck your mic? I think there is an internet issue. Awais Sahab के end पे. Let's just wait for him for a while. ताकि वो हमें rejoin कर सकें दोबारा. I am audible, Ms. Fatma. Can you confirm? Yes, sir. You are now clearly audible to us. Okay, thank you, everybody, and sorry for this interruption. And would like to thank Ms. Fatma and Pantera team first of all, then everybody who joined this session. And I hope you have power control thing is main feature from our side and requirement for every plant. And Muhammad Fizan and Mr. Rana is also presented a much brief session. Now I will be conducting a session on after sale capabilities on Huawei. Like अभी आपने देख लिया कि कंट्रोल कैसे करते हैं पावर को और बाकी फीचर्स Huawei के उससे रिलेटेड पावर से रिलेटेड क्या क्या हैं. इसके अलावा अब ये इसके बाद आपको फिर कोई इश्यू आता है या आपकी कोई रिप्लेसमेंट आती है तो उसको टैकल करने के लिए हमारी तरफ से हम आपको क्या फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और किस लेवल तक कर रहे होते हैं मैं बेसिकली उस पर प्रेजेंट कर रहा हूँ आफ्टर सेल जो Huawei की कैपेबिलिटीज इन पाकिस्तान. सो आई विल बी प्रेजेंटिंग फ्रॉम स्लाइड 2. मिस फातिमा, कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? Yes, sir, sure. And next slide, please. I hope your screen is visible to you. I'm still on. Yeah, now next. Okay, starting from the Huawei company, as you know, it's a global firm, and from technical center we have three main tech center who is responsible to
facilitate on after sale queries, like ticket is being generated, and within 24 hours they give you a solution by opening a ticket, and one responsible service engineer from tech center side is at the tech center and facilitate you on your query. And after that we have regional tech center. You can say from our side we have tech center in Romania for Pakistan region, and region center we have in UAE, and then in rep office Pakistan from Huawei side, and from our partner side Bahum side we are here to facilitate on after sale services. Next slide. And if you talk about R&D side, we also have 45% of our Huawei company's employee is from R&D side who facilitate us from backend side to facilitate and client. And if you talk about the capability in Pakistan, we have three local offices. Mainly, we have head office in Islamabad, then in Lahore and Karachi, and after that we have many distribution center partner side from our distribution network. We have web offices in our Pakistan who is facilitating on after sales services, sales and solution side. And after that we have warehouses. The main thing is warehouse. Right now, if you see, replacement is going on, but transition time is very important. So to reduce the transition time, we facilitate on replacement within 2 days in soft areas after the approval, after you get the approval from tech center. For that, we have many warehouses in every main city. And if you talk about how to contact tech center, तो टेक सेंटर से बेसिकली आपने रब्ता कैसे करना है, उसके लिए मेनली जो है वो हॉटलाइन भी है, लेकिन जो हमारे पास चल रहा होता है उसमें मेनली रिप्लेसमेंट हो रही होती है ईमेल्स पे, और ईमेल्स हम ऐसे यूज कर रहे होते हैं जैसे व्हाट्सएप के टैक्सेशन हमारी यूज हो रही होती है. तो ये जो ईमेल है यहाँ पे huinverter.sport@huawei.com, यहाँ पे आप अपनी कोई भी क्यूरी है, सीरियल नंबर इन सब्जेक्ट वो लिखें, अपनी क्यूरी ब्रीफ करें, और आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन लाइक 1 or 2 और आपकी टिकट ओपन हो जाएगी और वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे. अगर वो रिप्लेसमेंट है तो वो रिप्लेसमेंट की तरफ जाएंगे, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे लेंगे. जैसे ही ये आपकी रिप्लेसमेंट डन प्रूव हो जाती है तो विद इन 2 डे आपके पास इन्वर्टर जो है वो डिलीवर भी हो जाता है. और इसके अलावा जो लोकल है फ्रंट लाइन पे और ऑन साइट सपोर्ट के लिए भी और फ्रंट लाइन के लिए भी हमारे पार्टनर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं 24/7. नेक्स्ट स्लाइड. If you talk about residential inverter, so till 25 kTL we have residential inverter including L1 to low in Pakistan. We only have 3-phase inverters because of grid tight networks here in Pakistan is only of warranty. And other than that we have accessories like PV optimization and power sensor. For that we have 1 year of warranty. We offer 1 year in the warranty, but for optimizer it's for 25 years of warranty. For optimizer, I just like to brief you a little bit. We have introduced a 1300 watt optimizer who can support 2 panels at the same time, and optimizer is installed under the panel. For every lastly, if you choose 600 watt optimizer, it can support each panel. If you choose 1300 watt, it can support 2 panels. Next slide, please. If you talk about commercial and utility inverters, I like above 30 and above 30 kilowatt. We offer you 5 years of warranty, in which we can support you. We support on main key projects, on-site support, and remote support is also available in Pakistan. Then in Huawei office, partner office, then region office, then tech center. And then we have transformers. We have 300, 600, and also we have 3000, 6000, and also we have 9000 watt of kilowatt of transformer. We call it STS. We offer you 2 years of warranty for that. Next slide.
सो फॉर वारंटी चेक, आपका कोई भी इन्वर्टर है, आप परचेज कर रहे हैं, परचेज करते हुए भी उसकी वारंटी लाजमी चेक किया करें। उसमें दो चीज़ें आपने चेक करनी होती है, एक उसका सीरियल नंबर प्लेस करें इसमें वारंटी चेक में। ये जो लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ मिस फातिमा स्टक टू प्रीवियस स्लाइड। आप जब वारंटी चेक कर रहे होते हैं, सीरियल नंबर आपने अपने पोर्टल इस लिंक पे जाना है और अपना सीरियल नंबर वहाँ प्लेस करना है। वो आपको एक वारंटी सर्टिफिकेट दे देगा जो आपका प्रूफ है आपके पास ये वारंटी है। ये वारंटी एंड कस्टमर को हम डायरेक्ट फैसिलिटेट कर रहे होते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, पार्टनर और एनीबॉडी इन द मिड वे। आपने कहीं से भी इन्वर्टर परचेज किया हो, अगर वो पाकिस्तान रीजन में उसकी वारंटी है तो हम उसको आपको डायरेक्ट फैसिलिटेट भी कर रहे होते हैं। एंड क्लाइंट को भी टैग कर रहे होते हैं और ईपीसी कंपनीज को भी और डिस्ट्रीब्यूटर को भी, जो भी हमारे पास लेके आते हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको ये कहेंगे कि आपने ये इन्वर्टर जिसे परचेज किया था पहले उसके पास जाएं फिर वो हमें रब्ता करे, तो ऐसा नहीं है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से वारंटी चेक कर सकते हैं। उसमें आपके पास वारंटी पीरियड आ रहा होगा और रीजन आ रहा होगा। आप मेक श्योर करें कि वो रीजन पाकिस्तान ही लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर वो रीजन चाइना या यूएई या कोई भी और रीजन का है तो पाकिस्तान में आपको उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रे चैनल के थ्रू जो इन्वर्टर परचेज करते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट भी करते हैं और पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब भी करते हैं। तो फॉर दैट, फॉर योर सिक्योरिटी, हमने ये सपोर्ट जो है क्लोज की हुई है फॉर ग्रे चैनल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और उसके बाद जो है हम इनेबलमेंट प्रोग्राम होता है हमारा, जिसमें हम लाइक दिस वेबिनार्स करवा रहे होते हैं। ईपीसी कंपनीज के साथ जो है हमारे सेशन हो रहे होते हैं जिसमें हम उनको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन भी होती है और एक जेनेरिक जो है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड डिस्कशन भी होती है और आफ्टर सेल सर्विसेज में जो ओएनएम साइड है उससे रिलेटेड डिस्कशन भी होती है। उसमें अगर हम आफ्टर सेल में देखें तो हमारे पास जो हमारा पोर्टल है इसमें हम ओएनएम को देख रहे होते हैं। ओएनएम में आफ्टर सेल ओएनएम इज लाइक रियली इम्पोर्टेंट टू अस। तो इसमें हमारे पास एक पोर्टल है जिस फ्यूजन सोलर पोर्टल जिसका वर्जन 8 इस टाइम चल रहा है। उसमें एप्लीकेशन भी है और हमारा वेब पोर्टल भी है, जिसके अंदर हम सारे प्लांट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उनको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी एक रीजन की पावर चेक करनी है कि आप एक ईपीसी कंपनी है और आपने एक रीजन में चेक करना है कि आपके कितने प्लांट इंस्टॉल हैं, टोटल पावर कितनी है, तो आप इसका डाटा एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके अलावा पोर्टल से आप ये पावर कंट्रोल भी कर सकते हैं। पैरामीटर्स भी बहुत सारे हैं जो चेंज कर सकते हैं। फिर पॉपअप ईमेल्स भी ले सकते हैं कि आपको डेली रिपोर्ट मिल जाए, आपको मंथली रिपोर्ट मिल जाए। उसके अलावा आप इसके अंदर रिपल कंट्रोल है, इसके अंदर आपका जो है वो कंपनी मैनेजमेंट है। आप अपनी एक कंपनी बनाएं, उसके आगे आप डिफरेंट जो है उनको आप वो आगे प्लांट बना के दें और अपना एक पूरा नेटवर्क जो है वो बना लें ताकि आपको डाटा एनालिसिस में बहुत आसानी हो। उसके अलावा जो इसके अंदर है आफ्टर सेल के सपोर्ट के अलावा आप इसके अंदर अपने ओएनएम के पर्सन्स को भी ऐड कर सकते हैं, उनको लोकेट भी कर सकते हैं कि वो इस टाइम कहाँ है, ताकि आप नज़दीक तीन साइड पे अगर ऑन साइड कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप उनको लोकेट कर सकें। नेक्स्ट प्लीज। देन मेनली वी हैव इन आफ्टर सेल एनालिसिस, लाइक पहले हम क्या कर रहे होते थे, एक प्लांट पे हम विजिट करते थे, एक्सपर्ट प्लांट पे जाते थे और बस स्टिंग बाय स्टिंग और लाइक इन्वर्टर टू इन्वर्टर, तो बाय हैंड वो हर चीज़ का एनालिसिस कर रहे होते थे एक एक स्टिंग के एक एक पैनल के। तो हमारे पास एक टूल है जिसको हम आईवी कर्व बोलते हैं। तो आईवी कर्व टूल में ये है कि आपका इसको आप बाय इन योर ऑफिस आप इसको जनरेट कर सकते हैं। इस पैकेज को हमारे से ये पैकेज परचेज करके इस पैकेज को आप जनरेट कर सकते हैं। 15 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट आपके सामने आ जाती है और इसके अंदर जो है ये आपके 14 किस्म के जो फॉल्ट हैं पीवी पैनल के, वो आपको डायग्नोस करके बताता है, जो कि कंप्लीट एक एनालिसिस है ये। और कंप्लीट एनालिसिस हो जाता है इसका विद इन 15 सेकेंड। और इसकी एफिशिएंसी इतनी है कि आप इसको 95% तक जो है एफिशिएंसी लेवल इसका अचीव कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ Huawei में ये फीचर मिलता है क्योंकि ये लेवल 4 का आपका टूल है। बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर टूल। तो आप इसमें लाइक एक्सपर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ऑन साइट भी नहीं जाना, आपको जो है मैनुअली कोई डाटा नहीं लिखना, कोई मैन एरर भी नहीं है इसमें। जस्ट यू हैव टू डायग्नोस विद इन 2 मिनट्स। इसके अंदर ये आपको स्ट्रिंग लेवल की मॉनिटरिंग देता है और अगर पैनल लेवल की मॉनिटरिंग लेनी है तो हर पैनल पे आपको फिर पीवी ऑप्टिमाइजर लगे होंगे तो वो आपको पैनल लेवल मॉनिटरिंग भी ये दे सकते हैं।
उसके अलावा जो है विद इन 10 मिनट्स आपको जो रिपोर्ट मिलेगी वो एक डिटेल रिपोर्ट होती है। उसमें 3 किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं जिसको आप कंप्लीट जो है एनालिसिस आपका प्लांट का उसके अंदर होता है। नेक्स्ट है जी। हाँ जी, इसमें अगर आप देखें तो हम इसमें 95% तक एफिशिएंसी इसकी क्लेम कर रहे होते हैं, जो कि वेरीफाइड है फ्रॉम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जनरल इलेक्ट्रिक चाइना से, जो कि लेवल 4 है। सिर्फ और सिर्फ हुआवे का ही आईवी कर वैसा है जो आपको लेवल 4 जो है लेवल 4 लेवल की एफिशिएंसी देता है। नेक्स्ट प्लीज। Then we have HiNo app who can facilitate you with different types of documents. ये आपके हवाई प्रोडक्ट से रिलेटेड भी बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आप हवाई प्रोडक्ट से हट के भी बात करते हैं तो आपको ये बहुत सारा ऐसे नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अंदर ब्लॉग्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं जो आप पढ़ सकते हैं और अपना जो है नॉलेज जो है उस रिगार्डिंग टू पीवी प्लांट्स बढ़ा सकते हैं। और इसमें आप सारी रिक्वेस्ट जो आपकी चल रही है, आपका रिप्लेसमेंट केस कहाँ है, वो सारे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये अब तक जो मैंने प्रेजेंट किया, इस सारे का मेन फोकस ये होता है कि आपको आफ्टर सेल में जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड हो, लाइक रिप्लेसमेंट से लेके ऑन साइट सपोर्ट से लेके रिमोट सपोर्ट, और देन सॉफ्टवेयर टूल्स, देन डॉक्यूमेंटेशन। तो ये कंप्लीट पैकेज हम जो है वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं इन आफ्टर सेल, ताकि कोई भी कमी ना रह जाए इन आफ्टर सेल। कोई इशू आए, कोई क्यूरी आए, वो रिजोल्व जो है वो ना हो पाए। तो इसके लिहाज से अगर हम देखें तो मेरे पास 2 एप्लीकेशन केसेस हैं कि हम कहाँ कहाँ ONM दे रहे होते हैं। इन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप इसमें देखें तो हम ये एक हमारा प्लांट है गोबी डेजर्ट का, जहाँ पे सरफेस टेम्परेचर जो है वो 82 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर्स जो है वहाँ पे अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये टोटल इसकी ONM जो है बाय मेंटेन बाय हुआवे। तो हम गोबी जो इस लेवल ऑफ टेम्परेचर है इस पे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन्वर्टर जो है वो अपनी एफिशिएंसी पे रन कर रहा होता है। नेक्स्ट प्लीज। So like from hot to cold side, if you see this plant is like -19 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस प्लांट पे जो है इतनी नीचे लेवल पे भी हम जो है ONM हमारी टीम अवेलेबल होती है और फैसिलिटेट कर रही होती है। नेक्स्ट प्लीज। So that's all from Huawei capability sides. Huawei मसल्स क्या है और हमारे पार्टनर के मसल्स क्या है, ये सारा सेशन ये बताने के लिए था कि हाउ मच वी आर स्ट्रॉन्ग इन पाकिस्तान. So that's how we can facilitate you on everything. So if you have any